हेलो सर, नमस्कार। मैं देवेंद्र राणा, ग्राम मानपुर, डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़, डाक खाना मोड़, थाना टप्पल से बात कर रहा हूँ। मैं इस गांव का प्रधान हूँ, ग्राम पंचायत मानपुर से। और सर, ये हमारे गांव की जो स्थिति है ज़्यादा ही ख़राब है। मैंने आपको सारी वीडियो डाली हैं और यहाँ के लिए, विकास के लिए हमको थोड़ी आपकी तरफ से थोड़ा सा सहयोग मिले और हमें अच्छा लगेगा। हमारे गांव में लाइट की भी बड़ी दिक्कतें होती हैं। यहाँ पर रास्ते सही नहीं होते हैं। स्कूल बच्चों के लिए परेशानी होती है, काफ़ी दूर दूर तक स्कूल हैं यहाँ पे। इससे हम प्रदूषण से मुक्त हो सकते हैं। दूसरी बात, हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए पैसे की बचत भी कर सकते हैं। पैसा इससे काफ़ी बच भी सकता है। और हमारा गांव लाइट की समस्या में उलझा हुआ है। हमारे गांव में लाइट की व्यवस्था ठीक नहीं होती है। हमारे गांव में 24 घंटे में 8 घंटे लाइट आती है। तो इसलिए हम सोलर पैनल के बारे में कुछ व्यवस्थाएं की जा रही हैं। We have developed a mobile application, SolarX, that enables people in India to get on the solar grid for as little time, effort and money as possible. Upon initial onboarding, the users are asked for their income category so as to personalize recommendations that they are eligible for. In order to calculate the roof area, people can either use augmented reality or select their roof area on a map, for which the application asks for appropriate permissions upfront. To maintain high regards for our user privacy, SolarX works just as well without these permissions by offering an option to manually enter the roof dimensions. Augmented reality offers a highly accurate measurement tool for scanning roof area. Once the user has scanned their roof area using AR, they can alter the percentage of area to be used for the solar panels. The option to select roof area on the map uses geolocation and a satellite view on the map that users can draw and select their roof area on, followed by the percentage available, and then get an estimate on their solar installation costs and potential electricity bill savings based on the recommended subsidy. Using machine learning, the application also delivers the approximate monthly savings and lifetime carbon offset. Users have a choice to directly choose the recommended subsidy or to explore other eligible options. The subsidy page offers a comprehensive list of all the subsidies that the user is eligible for. SolarX also maintains a catalog of products suited to each income class and a list of contractors filtered based on their geolocation. Once the installation process is complete, users can track their real-time power generation based on local solar irradiance and weather conditions, get in touch with their prescribed contractors, or add another solar property. The Savings tab covers important metrics such as cash savings and carbon mitigations over time, providing users with insights regarding the return on their investment in solar panels. SolarX provides the required technology, economic incentives, and governance to make solar energy accessible to all.